Hello everyone, welcome to online classes for class 11. Myself Somnath and today that is my third lecture on unit and dimension, and today we start with a very important topic, significant figures. So obviously from the board you can understand so many rule and regulation is there. So first of all, what do you mean by that significant figure? The number of digits up to which we are sure about their accuracy. Means when we start calculation with respect to suppose vernier caliper or screw gauge, so we have to use some digit. For screw gauge 2 digit, for vernier for vernier caliper up to 2 digit, for screw gauge up to 3 digit. So this is called the significant figure, up to which we are sure about their accuracy. Now, rule for this counting the significant figure. So when you go through this rule and regulation, so you have to follow some rule regulation ki how much which values you are counting as a significant figure and which are you counting as a not significant figure. So rule number 1, all the non-zero digits are significant figures. Suppose in a given value, all the values are non-zero. I just give you one example. 2, 3, 5, 4, 6. So these all are non-zero. So these all numbers are counted in significant figures. So how many is there? 1, 2, 3, 4, 5. So we can write the number of significant figure is 5. Now the second rule is that the zeros appearing between two non-zero digits are counted in significant figure. That means if zeros appearing in between two non-zero digits, then that zero is counted as a significant figure. So here if you see 6.028, so 0 is there in between the two counting number or in between the two non-zero digits. So this one is counted as a significant digit. So 1, 2, 3, 4. Similarly 60.24, again 0 is in between two non-zero digits. So this one is also counted as significant figure. So the number is 4. Third rule is that zeros occurring to the left of non-zero digit are not significant figures. Now see, if the zeros occurring to the left, first one koi zero nahi tha, second one zero in between. Now the third one, if the zeros is on the left, so what happened? The zeros occurring to the left of non-zero digits are not significant figure. Means the zeros are on the left are not significant figure. So this one is only the significant figure. How many significant figure is there? That means 3. Okay, you can change here a little bit. It will be much better. Suppose 0, 1, 2, 3. So now see, the zeros in between is counted as a significant figure. Zeros in between counted as a significant figure, but zeros on the left not counted as a significant figure. So your number is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now all zeros to the right of a non-zero digit are not significant figure except decimal point. Means without decimal. यहाँ पे देखो हम लोगों में सबने किसी में decimal दिया है नहीं है. मतलब these all are for decimal और non-decimal दोनों के लिए valid है. But this one, all zeros to the right of a non-zero digit are not significant figure. digit का left वाला तो नहीं था, right वाला भी नहीं है अगर वो decimal नहीं है, मतलब except decimal. So except decimal हम लोग कितना काउंट करेंगे, इसका तो यहाँ तक काउंट करेंगे क्योंकि सामने वाला तो काउंटेड होता ही नहीं है. पीछे वाला में अगर डेसिमल नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. सो ये काउंट नहीं करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट वन, ऑल zeros to the right of a decimal point are significant figure. देखो डेसिमल अगर है तो उसका राइट का सामने वाला काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर डेसिमल है तो आफ्टर द सिग्निफिकेंट फिगर, आफ्टर द नॉन जीरो, इफ यू हैव zeros then you count it. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hope you understand. Again I repeat one more. All the non-zero digits are counted as a significant figure. अगर zero in between है तो उसको हम लोग significant figure में लेगा. अगर zero सामने में है तो उसको significant figure में काउंट नहीं करेंगे. डेसिमल का भी पहले और नॉर्मल का भी पहले. लेकिन अगर zero बाद में है, तो अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेगा, और अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेगा. Okay, my next topic is round off.
Again, you have some rule regulation, you have to follow them. If you understand them, then later on it's very, very easy. Round off. So for round off, what do you mean by round off? Suppose in a question they given you some significant figure. Suppose they given you 7 significant figure, and from the 7 significant figure, according to question, you have to round off in 4 significant figure. You have to round off in 4 significant figure. So then, in which manner your answer is, it's depend on the basis of that round off rule. So what is the first rule? If the number lies to the right, if the number lies to the right of cutoff digit is less than 5, then the cutoff digit is retained as such. However, if it is more than 5, then the cutoff digit is increased by 1. इसका मतलब है कि मुझे जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट अगर 5 से कम है तो एज इट इज, और अगर 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा दो. इन द क्वेश्चन सपोज मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मुझे 4 तक करना है. हम देखेंगे नेक्स्ट वाला 5 नंबर में क्या है, 4 है जो कि 5 से छोटा है. सो वी राइट एज इट इज 6.233. नाउ इन द सेकंड वन, सी we have to round off up to 4 significant figures. So we look next one, that is the 6, and which is greater than 5. So we increase 1. So it will be 6.234. Hope you understand. Now the second rule is that पहला वाला rule में क्या है कि if up to the digit you have to round off, if the next digit is less than 5 as it is, if it is greater than 5, then increase 1. Now the next one, if the digit to be dropped is 5. इसके पहले वाला में क्या था, 5 से कम या 5 से ज्यादा. अब आएगा सिर्फ 5. If the digit dropped is 5 followed by the digit other than 0, then the preceding digit is increased by 1. तो देखो अब क्या बोल रहा है, 5 से छोटा या 5 से बड़ा नहीं, 5 है और 5 के साथ कुछ वैल्यूज है, सिर्फ जीरोस नहीं है. मतलब जैसे देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू राउंड ऑफ सपोज 4 सिग्निफिकेंट फिगर. देन यू हैव 5, बट 5 के साथ 2 है, 5 के साथ 0 है लेकिन साथ में 1 है. मतलब 5 के साथ सिर्फ 0 नहीं है, नेक्स्ट डिजिट 5 है, 5 के साथ और कुछ नंबर है, या 0 है साथ में कुछ नंबर है, सिर्फ 0 5 के साथ नहीं है. सो सिंपली क्या करो, 1 बढ़ा दो. तो यहाँ पे देखो 2.345, हम लोग लेंगे 2.346, यहाँ पे 2.347 है, 5 से 0 है बट 1 है, सो 8. इसका अगर सिंपल माने समझे कि राउंड ऑफ के बाद वाला 5 से थोड़ा भी ज्यादा है मतलब 5 से ज्यादा है, तो 5 से थोड़ा भी ज्यादा है मतलब 5 से ज्यादा मतलब 1 बढ़ा दो. नेक्स्ट, if the digit to be dropped is simply 5 or 5 followed by 0, मतलब exactly 5 है. देखो exactly 5 और 5 के साथ 0 है, मतलब exactly 5 से थोड़ा भी बड़ा होगा 1 बढ़ा दो. लेकिन अगर exactly 5 है, then the preceding digit is left unchanged if even. Left unchanged if even, preceding digit is raised by 1 if odd. So now check, we have to round off up to 4 significant figure. तो देखो ये odd है और यहाँ पे क्या है, 5 या 5 followed by 0. So odd होने से क्या होगा, left unchanged if even and preceding digit is raised by 1 if odd. तो if odd है तो raised by 1, तो 2.344, 2.348. यहाँ पे देखो 6 है, 6 आने का अर्थ इवन नंबर, इवन है तो अनचेंज, तो 2.346, 2.348. होप यू अंडरस्टैंड. अगर 5 के साथ 5 है, एग्जैक्टली 5 है, या 5 के साथ 0 है आफ्टर मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, अगर एग्जैक्टली 5 है या 5 के साथ एग्जैक्ट 0 है मतलब फिर 5 हो गया, तो प्रेसिडिंग वाला जो डिजिट है अगर ऑड है तो 1 बढ़ा दो, इवन है तो एज इट इज. Okay, so the next is round off for addition and subtraction. How you round off in case of addition and subtraction? Suppose the measured value is to be added or subtracted,
the measured value is to be added or subtracted. The least number of significant digit after the decimal is in. Least number of significant digit after the decimal is in. Then the sum or difference is also the number of significant digit after the decimal should be n. Least number कहाँ गया? Least number of significant digit after the decimal is n. Then the sum or difference is also the number of significant digit after the decimal should be n. अब देखो, now in this one, after this decimal, how many significant digit? 1. Here after decimal, how many significant digit? 2. Here after decimal, how many significant digit? 3. So which one is least? 1. So we have to, this one is our result after addition, but as we add this 1, 2 and 3, so the answer should be in least number of significant digits. So the answer is 11.1, but here it is 4 and next is 5, so you write 5. मतलब समझा कि एडिशन के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, तो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट पे रखना है. यहाँ पे 4 के बाद 5 है, तो हम लोगों ने 1 बढ़ा दिया. सिमिलरली इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे देखो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2, यहाँ पे 1, तो क्या रखना है 1. सो क्या करना है 2.4. Next one is very important. Next rule is very important. Round off for multiplication and division. Suppose in the measured value is to be multiplied or divided, the least number of significant digit to be n. Last वाला में क्या था addition and subtraction में decimal n. Least number of significant digit after decimal is n. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे after decimal नहीं है, overall the least number of significant digits to be n. Then in the multiplication or division, the number of significant digits should be n. Last वाला है addition and subtraction देखना था, after decimal least significant digit क्या है, multiplication और division में देखना overall least number of significant digit क्या है. तो यहाँ पे देखो overall least significant digit is 2, यहाँ पे overall least significant digit is 4. So 2 और 4 में छोटा कौन हो गया, 2 हो गया. So answer should be in 2 digits. So the answer is 44. क्यों, यहाँ पे 0 है तो 1 आएगा नहीं, 0 ही रहेगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीस्ट कितना है 2, यहाँ पे लीस्ट कितना है 2, सॉरी यहाँ पे लीस्ट कितना है 3, यहाँ पे लीस्ट कितना है 2, तो लीस्ट क्या है 2. सो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट देखो गलती करके ये क्या लिखेगा 108 लिखेगा. अगर 108 लिख रहे हो सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया 3. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर. क्या होगा ये होगा 1 1 एंड एज आप बिफोर डेसिमल यू हैव 3 डिजिट, सो यू कैन राइट 0. अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 2, क्योंकि 0 इज नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट. सो 1 1 यहाँ पे देखो 0 के बाद 8 है, सो 1 ऐड हो गया. सो द आंसर इज 1 1 0. इट इज काउंटेड एज 2. सो यू हैव टू राइट इन दैट मैनर 1 1 0. होप यू अंडरस्टैंड दिस. Now my next topic is error analysis. So what do you mean by error analysis? The measured value is always some difference with the true value. Then the difference is called always the error. Means suppose you are measuring something, so you get some measured value and it has some actual value, so the difference is called the error. Now with this error, the first we start from the systematic error. What do you mean by systematic error? Systematic error means the causes of the error you know, then it is called the systematic error. Means the causes of this error you know, that means you can able to rectify it. For example, हम लोग कुछ वेट कर रहा है, तो जब हम लोग वेट किया तो मानो हम लोगों ने वेट करने के लिए एक बर्तन में
कुछ आलू डाला, 1 किलो आलू लेना है। तो जब बर्तन डाला, बर्तन का वजन है 200 ग्राम और मुझे 1 किलो आलू लेना है। तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले बर्तन डाला, उसका 200 ग्राम वजन है, फिर 1 किलो आलू डाला, तो मुझे 1200 ग्राम वेट मशीन में 1200 ग्राम मेजर करना है। तो 1200 ग्राम मेजर करने का मतलब मेरा 1 किलो आलू आ जाएगा। दिस इज वन वे। अनदर वे इज दैट हम लोगों ने पहले बर्तन डाला जिसका 200 ग्राम वजन आया, फिर देखा वेट मशीन में एक रेड कलर का स्विच होता है। इफ यू स्विच ऑन, देन व्हाट हैपन, देन इट विल बी 0, मींस विद दैट वेट नाउ इट इज 0 एंड नाउ यू पुट दिस 1 kilo. So when you put 1 kilo, now it measure 1 kilo. So that means this in systematic error, this systematic error, we know the error is due to that button, and you know the weight of the button is that 200 gram. So on that basis you can calculate it. Suppose तुम्हारे पास एक स्केल है, स्केल का the scale start from the 1 centimeter. तो तुम्हें मेजर करना है 10 centimeter. तो तुम क्या करोगे? 11 centimeter मेजर करोगे. So when you know the cause of the error, you can rectify this, and this is called the सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में एक आता है जीरो एरर, जिसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा जीरो एरर में वैल्यू 0 है तो यू स्टार्ट फ्रॉम द 0। कभी कभी पॉजिटिव एरर आता है, कभी कभी नेगेटिव एरर आता है। इट्स टोटली प्रैक्टिकल। सो मानो ये 0 है, तुम्हारा वैल्यू 0 से कुछ ऊपर आ रहा है इनिशियल, सो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, और 0 से कुछ नीचे आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव। जैसे वर्नियर कैलिपर या स्क्रू पर में, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग उसको नेगेटिव करते हैं, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग उसको पॉजिटिव करते हैं। मतलब अगर एक्स्ट्रा वैल्यू है, माने 1 सेंटीमीटर से शुरू है, 0 की जगह 1 से शुरू है, तो ये पॉजिटिव एरर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, और उसके बाद जो मेजरमेंट आएगा उससे हम लोग 1 को माइनस कर देंगे, तो इससे पॉजिटिव एरर। लेकिन अगर मानो 0 की जगह पे -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेजरमेंट आएगा उससे हम लोग माइनस ऑफ दिस, मतलब माइनस ऑफ -1, तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस एरर। So in systematic error, you know the cause of the error, so you can easily try to rectify it. That's why it's called the systematic error. Next is the random error. Random error क्या है कि you don't know the cause behind it, and as you don't know the cause behind it, so हमें क्या करना है, हमें बहुत सारा मेजरमेंट एक साथ लेना है, एंड देन हम उसको क्या करेंगे, एवरेज करते हैं। दैट इज कॉल्ड द रैंडम एरर। आई गिव यू वन एग्जांपल। सपोज बोला गया कि एवरेज पल्स रेट ऑफ अ ह्यूमन इज 72। अब मानो मेरा पल्स रेट चेक किया गया, कभी आया 72, मैं नॉर्मल हूँ, कभी आया 74, इसका मतलब मैं एबनॉर्मल हूँ, कभी आया 70, इसका मतलब मैं फिर एबनॉर्मल हो गया, कभी आया 76, मैं फिर एबनॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं। तो क्या है, मेरा ऐसे करके 10-12 ठो मेजरमेंट लिया जाएगा हार्ट पल्स का, और फिर उसका एवरेज किया जाएगा, और एवरेज करने के बाद मेरा जो वैल्यू आएगा वो ऑलमोस्ट 72 का आसपास आएगा। सो रैंडम एरर। लेकिन ये 72 के जगह पे कभी 74, कभी 72, कभी 70, कभी 76 क्यों आ रहा है? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नो वन कैन से कि व्हाई दिस हैपन। इवन आज का डेट में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है कि इन एडवांस मेरा पल्स रेट कितना आएगा नेक्स्ट वन ये बता देगा। क्यों? बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द ब्रेन, एंड ब्रेन इज सो कॉम्प्लिकेटेड। मैं अब क्या सोचूंगा ये कोई नहीं बता सकता है, तो उस हिसाब से मैं क्या सोच रहा हूँ उस हिसाब से मेरा पल्स रेट मेरा चेंज होगा। मैं अच्छा कुछ सोच रहा हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, पल्स रेट गिर जाएगा। मैं कुछ स्कैरी कुछ सोच रहा हूँ, मेरा पल्स रेट बढ़ सकता है। सो दैट मीन्स in that you don't know कि what is the cause of the error, हाँ, and how much is the error. So as you don't know, so क्या करते हैं हम लोग, randomly बहुत सारा वैल्यू लेता है और फिर उसका एवरेज करते हैं। So random error में we suppose choose A1, A2, A3 dot AN. So हम लोगों ने n वैल्यूज लिया randomly, like इसमें पेन का मुझे मानो डायमीटर मेजर करना है, तो बाय यूजिंग स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर हमने इसका डायमीटर मेजर करेगा। लेकिन हो सकता है ये इरेगुलर है, हो सकता है मैंने जब वर्नियर कैलिपर को लगाया हाथ में ज़्यादा प्रेशर दे दिया है, हो सकता है कि मेरा देखने के लिए कुछ प्रॉब्लम है। सो मेनी कॉजेस मे बी यू हैव, बट यू डोंट नो किसके कारण हुआ है। तो हम लोग एक के जगह पे क्या करते हैं, 5-6 मेजरमेंट रीडिंग लेता है, फिर उसका एवरेज करता है। तो ये जो 5-6 रीडिंग लेते हैं दैट इज कॉल्ड द रैंडम एरर। So you understand what you mean by the random error? Now after this random error, हम लोग ये जो random है इसका हम लोग क्या करते हैं, mean करते हैं। That is called the mean value. So A1 plus A2 dot an by n. So ये जो वैल्यू मिला
ये वैल्यू मिला मीन वैल्यू, that is you can say more accurate value. So this mean value is the average value, is the accurate value with respect to that random values. ठीक है. Next is absolute error. Absolute error. In absolute error what happens? In absolute error what happens कि सपोज मुझे फर्स्ट वैल्यू लेना है, सो व्हाट वी कैन राइट कि ये जो मेरा मीन वैल्यू आया, दैट मीन वैल्यू माइनस ईच वैल्यू. फॉर द फर्स्ट वन एब्सोल्यूट एरर वी कैन राइट a minus a1. फॉर द सेकंड वन वी कैन राइट am minus a2. फॉर द थर्ड वन वी कैन राइट am minus a3 dot 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 an, what we can write am minus an. So that is for the absolute error. So in this absolute error, I'll give you some example. Suppose normal heartbeat is 72 आया मेरा, और पहला वाला जो आया था ये भी 72 आया था, तो 0. उसके बाद वाला 74 आया था, तो 72 minus 74 minus 2. नेक्स्ट वाला जो पल्स रेट आया था वहाँ तो 70 आया था, तो 72 minus 70 that is 2. So absolute error can be positive, can be negative, can be 0. So ये मेरा हो गया absolute error. And then is mean absolute error. इस mean absolute error में मुझे क्या करना है, जितना भी absolute error है इसका magnitude का mean करना है. I repeat, mean absolute error में जितना भी मेरा absolute error आया है इसका magnitude का mean करना है. So how we write it? Del a m for mean. So del a1 we use the sign mod. Why we use the sign mod? Because in the absolute error you can have positive value, you can have negative value, you can have 0 also. So if you have positive then it's okay, but if you have negative then magnitude is positive, so convert it into positive. So that's why we use the mean part. Not mean part, sorry, magnitude part. Del a3 dot 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 del an by n. So that means now you have the mean absolute error. So when you have the mean absolute error, after that, so from this you get the mean absolute error. When you get the mean absolute error, then is the fractional error. What do you mean by fractional error? The mean absolute error by the mean value is called the fractional error. The mean absolute error by the mean value is called the fractional error. Okay, and sometime what happened, if you and if you multiplied, next is the percentage error. So percentage error is fractional error into 100%. So what you have plus minus del am by am into 100 is the percentage error. अब देखो इसके बाद क्या है इसका मतलब है, when we try to express stuff, so we can express any value in terms of mean plus absolute mean. This is one way of expression. कभी कभी हम लोग ऐसे करके एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी हम लोग इसको मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर में रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ ट्राई एंड न्यूमेरिकल, देन यू अंडरस्टैंड इट. Okay, so let's start with the numerical. The question is that the diameter of a wire as measured by a screw gauge was found to be 2.620 cm, 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 and 2.626 centimeter. Calculate number 1 mean value of diameter, number 2 absolute error in each measurement. Mean absolute error
fractional error, percentage error, and express the result in percentage error. So you can understand all the values are given, all the errors are given in single question. So let's start. What we have to find out first, the mean value of the diameter. So let D is the diameter and its mean value. So we have to add all of them. 2.620, 2.625, 2.630, 2.628, 2.626 by 5 centimeter. So after this, what we have 3.129 divided by 5, which is equals to 2.6258 centimeter. Now see, according to rule of addition and subtraction, what we know, after decimal, the minimum number of significant digit here is 3. So we have to round off it up to 3 significant figure. So this is very, very important and compulsory. 626 centimeter. If you kept in that form, then it's a wrong and examiner have the full right to cut your answer. Now, after getting this value, you have to find out the absolute error. So now this one is your mean value. Now the absolute D1. So DM minus D1, what we can write? 2.626 minus 2.620 del 2.626 minus 2.625 3, 2.626 minus 630 D4, 626 minus 2.628 D5 is 2.626 minus 2.626. So on that basis, what we have 0,006, 0.001, 0.004 with negative sign, 0.002, 0.000. If we see it properly, what we find, see how beautiful this question is. In this one, see, you have positive value. So that means you have positive error, you have negative value, that means you have negative error, and you have zero value, that means you have zero error. So that means in this question, I try to cover all the questions, like you have the positive error, we have the negative error, as well as we have the zero error. Now my next step is, we have to find out the mean absolute error. In mean absolute error, obviously we are choosing the magnitude part, means the positive part. So here you have some positive value as well as some negative value. So positive for okay and negative, you have to convert it into positive. So what we write, 0.006 plus 0.001 plus 0.004 plus 0.002 plus 0.000 divided by 5. Why we choose 5? Because we have 5 absolute error. Although we have 1 zero error, because the total is, we are including 5 values. So now that is equals to 0.013 by 5, which is equals to 0.003. 0.003 approximately after round off. Okay, so you have the absolute error or mean absolute error. You have the absolute error, or the mean absolute error is 0.003. Means maybe you have some value, then you convert it into up to the 3-digit round off. Now fractional error. So what do you mean by the fractional error? Absolute mean by the mean value. So how much is your absolute mean? 003 by the mean value 2.626 centimeter cancel. So how much you have? That is equals to, and you have to write here plus minus. So plus minus 0.001. Why we put plus minus? Because it will be more or less.
That means you are tolerant up to this. That's why it's sometimes called tolerance also. Percentage error, that is fractional error into 100 percentage. So what you have, plus minus 0.001 into 100 percentage, that is plus minus 0.1 percentage. So as you have the percentage error is 1, now the last one is express the result in terms of the percentage error. So how we express the diameter? 2.626 centimeter plus minus 0.1 percentage, or you can put this centimeter outside the bracket. See this one, plus minus this centimeter you can put, or you can put in 626 centimeter plus minus 0.1 percentage. The same answer you have. So hope you understand this. So I give you a worksheet on the basis of that. That up to error portion, whatever happened here, ठीक है. So तब तक के लिए goodbye, bye bye.